Hello everyone, you are welcome to your channel G Classes for Better Explanation and myself Govind Shah. Today I have just brought a very good topic for you all, and that is Theorem 6.1 and it is for class 10th. I must tell you ये आपका class 10th के लिए है और it is very important for you all because every year it is being asked in the examinations and this is famous name you must be watching. You must be getting, I have just not written here, you must be getting in word form, that is Thales Theorem, and it can be said as a basic proportionality theorem also, and in short form we can say it BPT. So it is very famous, very popular and very easy for you all, and every year this comes in examination. So please pay attention and have a look how I am just going to solve this. आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा. सबसे पहले देखिए कि ये आपका NCERT according to NCERT Theorem 6.1 you must get in your book. And what is the theorem? First let me read. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ये आपका थ्योरम है, आपका ये थेल्स थ्योरम है कि कह रहा है कि आप ऐसे इसको समझे कि कोई एक ट्रायंगल है और ये कह रहा है आपको कि इस ट्रायंगल में कोई एक साइड के अगर पैरेलल में कोई और एक साइड खींचते हैं आप, सपोज दिस इज साइड एंड इफ आई ड्रॉ दिस साइड एज अ पैरेलल टू दिस साइड, सो दिस साइड विल डिवाइड दिस टू साइड्स. देखिए ये जो साइड है वो इसको यहाँ भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. इट इज थ्योरम मीन्स दिस upon this and this upon this. We have to just prove. Let us have a look. It's written only already. So first the first work we have to just make a diagram as you must be watching, that is triangle ABC, और आपको ऐसे एक डायग्राम प्रिपेयर कर लेना है. आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि what is the procedure to move just further. सबसे पहले देखिए कि as you must be knowing what is the rule to just prove any theorem. These are the certain criteria which you will have to follow in the beginning. I mean to say this is given, you have to just write in the beginning. Given में आप क्या लिखते हैं? What you write in the given, what you are having and what we are having here. ABC is a triangle, so I have just written here ABC is a triangle in which D parallel to BC and BC intersects other two sides AB and AC at D and E respectively. And the same thing I have just told you only, this triangle we are having ABC, this DE is drawn here parallel to BC, it's given here. And what to say after that, you see this AB side and this AC sides, it is intersected by D here and it is intersected by E here, so it is there given. I have just written. Now after that the next step, that is to prove. What to prove? And I have just told you already in the beginning what to prove. The sides are divided in the same ratio, means what? This was AD, so AD upon DB is equals to AE upon EC. We have to just prove this only, so it is there to prove. Now the next step, that is constructions. It is used as per requirement, so it is here, requirement is here, so I have just done here. And what is the requirement of this? I must tell you, construction it is there, draw EM perpendicular AB and DN perpendicular AC and join BE and CD also. So what to do? You see this EM, you know perpendicular line, this is a horizontal, and when this kind of line is just a straight line is standing on this is said to be perpendicular lines. This, so in the same manner this is base here and this is perpendicular, you see in the same manner. So this EM and this and DN is drawn perpendicular here and DC and EB both are joined also. So this is the construction part. ये मैंने construction कर लिया, मैंने उसे मिला दिया है और perpendicular खींच चुका हूँ. अब देखिए next step में the fourth step, that is proof. और यहाँ से हमारी शुरू होती है questions की कि हम लोग ये जो part होती है आपको ये हमेशा लगभग दिया ही रहता है, बस समझने की आप लोग की जरूरत होती है. There is need to understand, but this part we have to just make, we have to just create. तो देखिए आइए कैसे करते हैं. सबसे पहले प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है, we have, that will be used at first. तो सबसे पहले we have में हमने लिखा है, आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE and that is just equals to half into base into head. I have just written, and you must be knowing when we talk about the area of any kind of triangle, there is a common formula for them. What is the formula for finding area? क्या है formula भाई? Half into half, I mean to say 1/2 into base into height. So it's written here
1/2 into base into height. And if you talk about the triangle ADE, then you must find where is ADE. This is ADE. So this is triangle ADE, and ADE is having a base AD and perpendicular, already I said this is EM. So I have just written as a half, means 1/2 into base, that is AD, and height, that is EM. तो मैंने वहां पे लिख रखा है और मैंने इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया है। अब आइए इस पार्ट में चलते हैं। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ, you see this was first part, now second part. Now similarly I have taken this triangle ADE. अब देखिए दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेते हैं, ये आपको ज़्यादा जरूरी है, you must pay attention. दूसरा ट्रायंगल देखिए मैंने ये ले रखा है, this you see, and this triangle you see this is triangle BDE. And what is triangle BDE? So if you talk about the area of triangle BDE, the formula is same, half into base into height. But let us have a look where is the base and where is the height. We have to just find, it's needed. तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, that's written half into base into height, आप जानते ही हैं। लेकिन बेस इसका क्या होगा, तो बेस इसका सिंपल है, ये हो जाएगा आपका BD और DB you can say. So it's written here base, but height is not there, and you must be knowing about that the scalene triangle it is not easy task to find the height. अगर ये equilateral triangle होता है, suppose यहाँ देख सकते हैं, if this is equilateral and equilateral triangle, then this can be said as a height, this can be said as a height, this can be said as taken as a height, and this all sides can be taken as a base 1/1. अगर ये isosceles triangle होता है आपका, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट आप ले सकते हैं, या फिर इसके बीच में कर सकते हैं. बट इफ इट इज एनीवेयर इट इज स्केलिन ट्रायंगल, लेट मी जस्ट इरेज दिस. सो व्हाट टू डू, सपोज दिस इज स्केलिन ट्रायंगल. देखिए अगर ये स्केलिन ट्रायंगल आपका ऐसा है, जैसा फिगर है मैं वैसा ही बना रहा हूँ. देखिए ये आपका ऐसा फिगर है. अब देखिए इसमें हाइट तो कहीं हमको दिख ही नहीं रहा. तो whenever such kind of triangle will be there, scalene triangle will be there, their height will be, but we will produce the side, then we will get it. और देखिए कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको साइड को प्रोड्यूस करेंगे ऐसे करके. देखिए कोई भी एक साइड को एज पर द रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पे ये साइड है और ये है, और देखिए ये आपका परपेंडिकुलर का काम करता है स्केलिन के लिए. सर इफ ट्रायंगल विल बी लाइक दैट, देन वेयर टू गेट, भाई इसको बढ़ाइए ना, ये ऐसे करिए, और दिस विल बी वर्किंग एज अ हाइट, बेस विल बी हियर, डोंट बी कंफ्यूज. अगर ये ट्रायंगल आपका यही है स्केलिन, अगर बेस का बात करते हैं तो आपका ये बेस यही होगा. आपका अगर बेस का बात करते हैं तो यहाँ बेस यही है, बट द हाइट इज दिस taken as a, and here height is this. So in the same condition, same triangle I have just taken. So this is triangle, and if you produce this side BD to M, then this ME means EM will work as a height for this triangle. ये EM करेगा height का काम, तो EM just I have written. अब देखिए उसके बाद ये इसको दूसरा इक्वेशन आपको कंसीडर कर लेना है, और उस दूसरा इक्वेशन कंसीडर करने के बाद क्या करना है, what to do, we have to just divide equation first by equation 2 or second we can say. तो इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड, सो इट्स रिटन हियर नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2. इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देना है. तो इक्वेशन LHS पार्ट विल बी डिवाइडेड बाय LHS एंड RHS विल बी डिवाइडेड बाय RHS. नो नीड टू से. तो देखिए LHS इसका एरिया ADE ट्रायंगल और एरिया BDE ट्रायंगल. सो आई हैव रिटन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE. सर इसको ऊपर इसको नीचे, भाई एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 2 नंबर से, तो 2 नंबर विल बी इन डाउन, यू मस्ट पे अटेंशन. तो ये एरिया बाय ये एरिया हो गया आपका. देखिए उसके बाद ये RHS इसका हाफ इंटू AD इंटू EM, हाफ इंटू AD इंटू EM, और इसका RHS देखिए हाफ इंटू DB इंटू EM, हाफ इंटू DB इंटू EM. इट्स रिटन वेरी क्लियरली. अब देखिए इसके बाद जब लिखते हैं तो देखिए दिस EM एंड EM, कैन आई कैंसिल दिस? Yes, why not? Both are same, we can cancel it. So you see, and this half 1/2 and 1/2, it will be also cancelled. So what is the left part left over here? You see AD in numerator, DB in denominator. तो देखिए AD और DB आपका ये बच गया है इधर से. तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज जस्ट इक्वल्स टू AD अपॉन DB. So I have just written therefore, and this is considered as equation 3. अब देखिए इक्वेशन 3 तक बहुत हल्का है, बस इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है. थोड़ा सा ध्यान लगा के देखें, अभी तक सिंपल है. सबसे पहले मैंने क्या किया, ये ADE ट्रायंगल लिया छोटा सा, फिर मैंने BDE ट्रायंगल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, और यहाँ से एक इक्वेशन मिला, दैट इज AD बाई DB इक्वेशन 3. अब देखिए सेम चीज अभी तक जो मैंने किया है वही चीज करना है, बस इधर से करना है. तभी मैं उधर से कर रहा था, नाउ आई विल डू बाई दिस साइड. So you just see what to do after equation number 3. Again, we have to take area of what? Which triangle you know? ADE लिया था मैंने ADE. अब लेना है AED.
सर ये तो सेम ट्रायंगल ले रहे हैं, हाँ भाई सेम ट्रायंगल ले रहे हैं, बट द नेम राइटिंग ऑफ द नेम इज डिफरेंट मैनर, सो इट इज आई एम टेकिंग एज AED. तो एरिया ऑफ AED, एंड इफ यू टॉक अबाउट द एरिया फॉर्मूला देन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ, बट बेस इज वेयर इज बेस, दिस इज, सो दिस इज AE वर्किंग एज अ बेस, एंड दिस सर इसका हाइट कहाँ होगा भाई, ये देख रही है ना हाइट, ये दिस DN, सो DN is height, so I have written as height, and equation number 4 it is considered. Now after that same, there I just took this triangle BDE, now I will take what, आप बोलिए CED triangle. Now you see this triangle will be taken CED, और बेस का बात करें तो ये EC हो जाएगा, और हाइट का बात करें तो इस ट्रायंगल में तो हाइट है नहीं भाई, तो हाइट कौन काम करेगा इसका, यू प्रोड्यूस दिस साइड हियर एंड दिस विल बी वर्किंग एज अ हाइट. जैसा कि मैंने बोला, आप देख सकते हैं, मैं फिगर भी दिखा सकता हूँ. यू सी दिस साइड इज प्रोड्यूस एंड दिस इज वर्किंग एज अ हाइट, दिस एंड दिस इज योर ओनली व्हाट आई से DN. तो एरिया का बात करें तो हाफ इंटू A इंटू DN, इक्वेशन 4. देन आफ्टर दैट यू विल टेक अबाउट दिस DEC you are talking, sorry, so CED will be what, half into base is EC and height is what, DN, the same height will be there, and considered as equation number 5. द सेम थिंग यहाँ पे एक नंबर इक्वेशन को 2 से डिवाइड किए थे, यहाँ पे आपको करना है जो है 4 नंबर को 5 नंबर से. तो विल राइट हियर इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 5, और डिवाइड करेंगे तो एज यू नो LHS विल बी बाय LHS, RHS विल बी बाय RHS. सो area of triangle AED upon area of triangle CED, it's written here. 1 half into A into DN upon half into EC into DN, it's written here. अब देखिए half and half can be cancelled here. This DN and this DN can be cancelled here. So what is left over here? AE upon EC, you see, and this is LHS. So now come to this part. This is your third part, working third region where I am just writing. So area upon triangle AED upon area of triangle AED upon area of triangle CED, ये just equals होगा किसके, AE by EC के, और this you consider equation number 6. अब देखिए 6 इक्वेशंस आ चुके हैं हमारे पास. एक ये इक्वेशन है 6. अब देखिए इससे पहले भी एक ऐसा इक्वेशन आया था जब वो दोनों ट्रायंगल को डिवाइड किए थे, दैट वाज इक्वेशन 3, वो 3 नंबर इक्वेशन था आपका. तो अब इक्वेट कीजिए इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 6 को. तो जब इक्वेट करते हैं तो क्या होता है, जो सेम पार्ट होते हैं, सेम वाले पार्ट वो क्या हो जाते हैं, ऑलरेडी कैंसल्स हो जाते हैं. तो इट विल बिकम कैंसल. सो हाउ इट विल बिकम, यू सी दिस वाज, यू सी देयर पार्ट LHS, area of triangle ADE upon area of triangle BDE, and here you just see the part area of triangle AED upon area of triangle CED. So it will be cancelled now, be these two. And why it will be cancelled, I will write, space is not there, so I will write later, just wait. So these two parts it is cancelled, because here it is seeing ADE and AED both are the same triangle, so it will cancel. But for this it is a problem. But if suppose this part and this part both are removed, then what is left, AD by DB is equals to what, AE by EC. So hence it is proved AD by DB is equals to AE by EC. And you must be thinking, sir, where this part has gone? I must tell you, this ADE and this AED will be cancelled, you know, because both the triangle are same only. And if you talk about this, sir, BDE and this CED, they were not equal. Why did you cut, sir? तो I must tell you, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच में, सेम पैरेलल लाइन के बीच में कोई दो पिक्चर्स होते हैं और सेम बेस पे होते हैं, तो उन दोनों का एरिया इक्वल होता है. सपोज दिस टू आर, you see, suppose what, these two are triangle only, you see the triangle condition, this triangle and this triangle both are on the same base, this base, you see this triangle and this triangle both are on the same base and between the same parallel, so these two triangles area will be equal. This is a theorem, so for that I have just cancelled this triangle or this triangle, so it is cancelled. So you will write at last, I will write. So let us have a look. Area of triangle ADE is equals to area of triangle AED. You must be watching, these two are equal only, so no need to write anything. But for triangle we'll write, for area of triangle BDE is just equals to area of triangle what, let me see, CED. So why I just cut it, why they are equal, you know, triangles are, the statement which will be written, it is needed, triangles are on the same base, and between the same parallel lines,
equal in area, are equal in area, are equal in area. So this statement we will write at last, and hence this theorem it is proved. You must recite, I will must recite these triangles are on the same base and between the same parallel lines are equal in area. So this LHS part was cut and the left part was AD by DB upon AE by EC, and hence this theorem is proved. This BPT theorem is proved, this Thales theorem is proved, and you can just have a screenshot if you want to take. ऐसे ही मिलते रहेंगे. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.